Okay. So we are starting off actually with a very, very critical topic. A very interesting topic, as Zakia ma'am said, that you cannot really do anything at an effluent stage unless you work at a foundation level, unless you fix what is going wrong at the beginning. The importance of quality care and education in the early years of children under the age of 6 cannot be overstated. And despite increased awareness and policy measures, the current data paints a concerning picture. Only a small percentage of Indian children have access to formal ECCE programs, and a significant numbers do not receive any pre-primary education before starting primary school. And in rural areas, the numbers are even lower. Various studies have shown that children who receive ECCE tend to perform better in primary and secondary school and have higher academic achievement and better health outcomes compared to those who do not receive ECCE. While we've seen a lot of progress at an attitudinal level, at a policy level, the data shows a different story. And I would like to read out a few statistics points to highlight the current state of early childhood care and education in our country. Only 10% of Indian children aged 4 to 5 years have access to formal ECCE programs. 60% of children in India do not receive any form of pre-primary education before starting primary school. In rural areas of India, only 2% of children aged 3 to 6 attend an organized early childhood education program. The gross enrollment ratio in pre-primary education in India was 13.4% in 2019-20. According to the National Family Health Survey, only 41.6% of children in the age group of 3 to 6 were attending any kind of preschool or in an educational institution. And if I look at the whole care as perspective, as of 2020, according to World Health Organization, approximately 34% of children under the age of 5 in India were reported to be stunted, which is they had a low height based on their age. In 2020, we had an estimated of 17.3% of children under the age of 5 in India were wasted. That is, they had low weight for their height. And stunting is most prevalent in rural areas of India, affecting approximately 38% of children under 5, compared to 27% in urban areas. Most of us sitting in this room who are parents, educators, system leaders, policymakers, are probably not surprised with the statistics. And that is what is heartbreaking, and that's why this is important to talk about a topic like Madhukar mentioned in the morning, which has been talked about for over decades, but it's important to see people who are working on the field, be it from a nutrition point of view, be it from health perspective, from education and technology, how are they all coming together to perform, to implement programs on field? What are their challenges? What are their gaps? Those are the kind of questions that we are going to be exploring today. Okay, and with this context, I would like to ask my very diverse and esteemed panelists that, starting with you, Bhagyada, how do you see health, nutrition, and education connecting, and what kind of impact, long-term impact, does it have on children if we start early and start right? Thank you, Hona. Thank you for having me here. I'm from an organization called Foundation for Mother and Child Health. We focus on first 1,000 days of a child's life. Our focus is to work with mothers and help in reduction of malnutrition. Why we chose first 1,000 days is because brain development happens from the first day of pregnancy. So for first 1,000 days is from first day of pregnancy up till the child is 2 years of age. There is enough evidence which says that if the child gets good nutrition in first 1,000 days, it is going to decide how the child's height is going to be. Ahona spoke about a good number, that is stunting. And we see that in India, over the years, children have started becoming very stunted. And good nutrition in the first 1,000 days is going to decide how intelligent the child is going to be, how is the health status later in life, how smart he is going to be in education, and how much will be will the child's concentration be while the child is studying. That's where nutrition plays a very, very important role.
Uh, just want to share a story. So when we went to Anganwadi in various locations, we simply asked that, okay, did you have your breakfast, right? And these children, early morning, 10 a.m., 11 a.m., they are studying with the teacher, and with very low energy, they are sitting and doing some small activities. When we ask them about their breakfast, they are saying, yes, we had breakfast. Okay, what did you have? It's usually chai khari in tribal areas, and maybe a chips packet in the urban area. So it's not just a problem in rural or urban setup, it's both. And the meal that is going to come to the child is going to be, say, at 12 o'clock or 1 o'clock. That's where the problem lies. Before coming to the school, the child is not getting enough nutrition, or say it doesn't, in the body there is no enough energy or protein to concentrate on studies. This is how nutrition plays a very, very important role for good education. First 1,000 days, because this is the period where rapid development, rapid brain development happens. And in fact, the brain development happens around the first day of pregnancy. So the question is the child school ready in terms of physical health and cognitive health before it goes to the preschool age? That's the question we wanted to answer, and that's the problem which we wanted to solve. That if we focus on the first 1,000 days on health and nutrition, we'll be able to stop the child go into a stage of malnutrition, and it will help the child have a better life later. So that is why nutrition is very, very important in both physical development, cognitive development, and overall development of a child. So that's the focus. Thank you so much. And you brought a very important perspective of कि बच्चा जब सुबह आता है और वो खा के नहीं आता है तो किस प्रकार से वो अपनी एक्टिविटीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा. एंड दैट्स वन ऑफ द एक्सपेक्टेशन दैट वी हैव फ्रॉम आवर चिल्ड्रन इवन एट दैट एज ग्रुप कि इस उम्र में तो बहुत एनर्जी होती है, so they need to be actively participating, and our curriculum is defined and designed based on the domains which require them to work on running and skipping and sitting and jumping, for which they need nutrition. And I remember in one of my visits to an Anganwadi in Lucknow, एक बार ऐसे हुआ था कि I went at a time where there were certain folks from UNICEF who had come to probably understand the health and weight indicators in the Anganwadi. और वहाँ पे there was a helper and there was a Anganwadi worker. And so they had started taking the indicators and going through the whatever their documentation was in the classroom. And what we realized is that all the children were lined up and made to sit in one corner, and they were very, very restless. And एक एक करके बच्चे आगे जा रहे थे. And we waited for like 45 minutes, and we were utterly bored. And the kids were not doing anything. And I remember asking the Anganwadi Tai, दीदी क्या हुआ है, क्योंकि helper दीदी है. Why can't we just start a small circle behind and get the other younger kids started instead of making them sit upright जब तक आप ये कर रहे हैं activity. And that दीदी said कि नहीं दीदी, जब पोषण का कुछ काम हो रहा है तो पढ़ाई नहीं हो सकती. And that kind of struck a chord in me. And उसी से मैं वर्षा मैम आपके पास आऊँगी ये पूछने के लिए कि आंगनवाड़ियों में काफ़ी सर्विसेज हैं and all are very well defined and focused. लेकिन हम हर समय सारे सर्विसेज को उतना एक प्रकार का एक समान का समय नहीं दे पाते हैं. एंड व्हाट डू यू थिंक आर द चैलेंजेस, और व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या अच्छे से हो रही है या कहाँ पे गैप्स नज़र आ रही हैं हमें? थँक्यू अहोना मॅम. ICDS मी ICDS सुपरवायझर म्हणून काम करते पुणे जिल्हा. सो अंगणवाडीमध्ये जसं अहोना मॅमने म्हटलं की 6 सेवा आहेत आमच्या. त्याच्यामध्ये पोषण ही एक सेवा आहे, प्रीस्कूल एज्युकेशन ही एक सेवा आहे. तर खरंच होतं असं की स्ट्रेच होते कपॅबिलिटी. जसं मधुकर सरांनी म्हटलं की एखादी ॲडिशनल गोष्टींचा विचार करण्याची खरंच गरज आहे. कारण ज्यावेळी आपण पोषण संबंधी विचार करतो तेव्हा त्याला प्रायोरिटाईज केलं जातं, ज्यावेळी प्रीस्कूल म्हणतो तेव्हा त्याला प्रायोरिटाईज केलं जातं. सो असं वाटतं की ह्या गोष्टींची आता गरज आहे. थँक्यू. एक फॉलोअप क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं तो अगर ये साथ में होने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या चैलेंजेस आ जाती हैं आंगनवाड़ी ताई को या सुपरवाइजर्स को कि ये गैप्स रह जाती हैं? चॅलेंजेस के लिए एक गोष्ट आहे की मॅनपॉवर.
की जिथे मॅनपॉवरची खूप कमतरता आहे. इवन इन अंगणवाडी वर्करमध्ये भरपूर पोस्ट व्हॅकंट आहेत. ॲज अ सुपरवायझर म्हणून मी काम करत असताना भरपूर पोस्ट व्हॅकंट आहेत. सो ॲडिशनल जो कामाचा ताण आहे तो आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी प्रीस्कूल एज्युकेशन म्हणजे असंही आहे की काही ठिकाणी खूप छान पद्धतीने घेतलं जातं, ज्याच्यामध्ये प्रायोरिटाईज केलं जातं की प्रीस्कूल एज्युकेशन या वेळेतच होईल, पोषणच्या गोष्टी आहेत त्या त्यानंतरच होतील. सो असं आहे, परंतु काही ठिकाणी ते नाही करता येत. Thank you. Kishore ji, coming to you. I think nutrition और पोषण के बीच में I think something which nutrition and education के बीच में something that is now tying it all together is technology. और on one hand जितना टेक्नोलॉजी के हमको पॉजिटिव्स नज़र आते हैं, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं बताने के लिए कि टेक्नोलॉजी का रोल प्री स्कूल एंड अर्ली ईयर्स में कैसे हम दिखा पाएँ. तो माई क्वेश्चन टू इज़ कि आपके एक्सपीरियंस में व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस आर एसोसिएटेड with engaging parents in early childhood education programs from the lens of technology? Sure. I'll just start my answer, just an add-on to the answer given by the Varsha ma'am. So आंगनवाड़ी की तरफ मुझे जो प्रॉब्लम अभी उन्होंने मतलब the problem we are talking about the nutrition related and other things, right? So the problem start with the awareness of parents. So they just look at the आंगनवाड़ी is like मतलब व्हाट इज़ आंगनवाड़ी. अगर हमने किसी से पूछा किसी पेरेंट्स को कि आंगनवाड़ी क्या होती है, तो बच्चों को वहाँ पे खाना दिया जाता है, उनको वैक्सीनेशन दी जाती है. ऐसी चीज़ों से मतलब हाँ ऐसी मतलब द मेन आइडेंटिटी ऑफ एन आंगनवाड़ी इज़ लिटिल डिफरेंट. मतलब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है, मतलब इट्स अ सेकंडरी प्रायोरिटी फॉर देम. अँड मतलब वहाँ पे कुछ म्हणजे मराठीमध्ये पण सांगू इच्छितो की मुलांना खेळ खेळलं जातात वगैरे, तिथे मुलांची काळजी घेतली जाते. अशा पद्धतीने पालकांचा दृष्टिकोन आहे अंगणवाडीकडे पाहण्याचा. आणि जो प्रश्न आहे की टेक्नॉलॉजीला कसं आपण याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस करू शकतो, तर बेसिकली आम्ही जेव्हा स्टार्ट केलं होतं काम करायला याच्यामध्ये, तर सुरुवात जी होती तर ते सुरुवातीचा मुख्य मुद्दा हाच होता की हाऊ वी कॅन इंट्रोड्यूस द टेक्नॉलॉजी टू जस्ट इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ ECCE. मग त्याच्यामध्ये सगळ्याच गोष्टी आल्या, म्हणजे एज्युकेशन आला, न्यूट्रिशन असेल किंवा इतर पण गोष्टी असेल. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग जो आहे तो पॅरेंट अवेअरनेसचा जो आहे. सो पॅरेंट अवेअरनेस इज पॉसिबल युझिंग द टेक्नॉलॉजी. सो टेक्नॉलॉजी आजकाल आपण पाहतोय की जवळपास रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया किंवा सगळ्याच प्रकारच्या जॉग्राफीज जरी कन्सिडर केला तर ऑन अन ॲव्हरेज वी हॅव ऑलमोस्ट 65% प्लस पेनिट्रेशन ऑफ व्हॉट्सअप टाईप ऑफ टेक्नॉलॉजी, राईट. तर त्याचबरोबर इतर पण अनेक बऱ्याच गोष्टी आहेत, यूट्यूब आहे किंवा असे बरेच काही टेक्नॉलॉजीज वापरल्या जातात. त्याचबरोबर अंगणवाडी सेविकांकडे पण व्हॉट्सअप वगैरे स्मार्टफोन, अँड्रॉइड फोन अवेलेबल आहेत. तर या गोष्टींचा कसा जास्तीत जास्त उपयोग करू शकतो, ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला की अवेअरनेस बिल्डिंग जे आहे तर ते केलं पाहिजे. अवेअरनेस बिल्डिंग आपण त्याच्यामध्ये करू शकतो. तर याच्यामध्ये अपॉर्च्युनिटी हीच आहे की ॲक्सेस टू द टेक्नॉलॉजी इज बिकम ईजियर नाउ, राइट. मतलब कि टेक्नोलॉजी अगर हम चाहते हैं कि टू इम्प्लीमेंट इन द सिस्टम, सो दैट इज़ नाउ ईजियर. क्योंकि 10 साल पहले अगर हम सोचते कि अगर कुछ टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस करें तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे. लेकिन अभी अगर कुछ टेक्नोलॉजी का हेल्प अगर हम चाहते हैं, सो दैट इज़ ईजियर नाउ. सो दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस. बट जो चैलेंज भी है इसके साथ, द चैलेंज इज़ लाइक कि जो रेस्ट 30-35% जो पेरेंट्स है तो उन तक कैसे पहुंचा जाए. सो देर आर आल्सो मतलब कुछ अल्टरनेटिव पाथ्स है, लाइक मतलब अगर हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते सो वी हैव सम इनडायरेक्ट पाथ्स. बट अगेन द सीन इज़ की टेक्नोलॉजी यूज़ करने के वजह से सो इट अलाउज अस टू मॉनिटर द थिंग्स, राइट. सो जो भी इंटरवेंशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, सो टेक्नोलॉजी अलाउज टू जस्ट मॉनिटर कि हाँ क्या हम कर रहे हैं, हाउ मच इट इज़ रीचिंग एट द ग्राउंड लेवल, राइट. एंड मतलब ये सारी चीज़ें स्टेटिस्टिकली भी हम एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या ग्राउंड रियलिटीज़ है. एंड वर्किंग ऑन अ स्केल, सो टेक्नोलॉजी इज़ आई थिंक इट्स मस्ट, राइट. क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की भी बात करें, सो इट्स वन ऑफ द बिगर स्टेट, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, टोटल नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा है. सो जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करेंगे to monitor, to
to introduce the interventions, right? तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल लगेंगी. बट चैलेंजेस भी है, लाइक मतलब जैसे हमने कहा कि कुछ जगह पे हमें पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, कुछ कुछ जगह पे वी हैव टू वर्क लिटिल मोर इंटेंसली कि उनको कुछ ट्रेनिंग्स की जाए. सो वो चीज़ें भी हमने करी है लेटेस्ट में भी, मतलब लाइक मतलब हमने अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करी है टीचर्स के लिए, हाउ टू सेंड अ वॉइस नोट इन द ग्रुप, राइट? मतलब many of the parents may be not able to read the text sent on the WhatsApp, right? So but audio से तो एटलीस्ट वो समझ सकते हैं कि उनको क्या करना है, तो अवेयरनेस भी जो है, सो ये सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड है इन दिस स्पेस. आपके लिए एक फॉलोअप क्वेश्चन है. हमारे ऑडियंस के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए आप जब जो भी मैसेजेस भेजते हैं या जो भी वीडियोस या जो भी रिसोर्सेज जाती हैं पेरेंट्स तक, उनके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज दैट पेरेंट्स आर रिसीविंग, एंड आपको क्या लगता है किस प्रकार से उससे उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, दैट व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स, एंड कैसे वो उनके घर में उनके बच्चों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है. राइट. तो जो इंटरवेंशंस मतलब हम सोचते हैं कि पेरेंट्स तक पहुंचने चाहिए टू बिल्ड एन अवेयरनेस, तो एक तो ये चीज़ है कि सोसाइटी में किसी एक चीज़ के बारे में कुछ इमेज क्रिएट करना आहे, तो ते जस्ट लुक ॲट समवन एल्स, राईट? म्हणजे आम्ही असं पण केलं होतं की काही जे सेलिब्रिटीज आहेत किंवा काही पब्लिक फिगर्स आहेत, तर त्यांची हेल्प घेऊन आम्ही काही कोलॅटरल्स क्रिएट केले होते, जस्ट टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन की दे स्पेंड सम टाइम विथ देअर चिल्ड्रन्स. मतलब कितीही मोठा व्यक्ती असो किंवा कोणीही असो, तर एव्हरीवन हॅज टू स्पेंड सम टाइम विथ द चिल्ड्रन्स. इट्स इम्पॉर्टंट फॉर देअर लर्निंग पर्स्पेक्टिव्ह. मतलब त्यांच्या शिकण्याच्या दृष्टिकोनातून ते फारच अत्यंत महत्त्वाचं आहे, हे त्यांच्यावर बिंबवण्यासाठी आपण तशा प्रकारे पण प्रयत्न केले होते. म्हणजे काही सगळ्याच गोष्टी टेक्नॉलॉजी थ्रू, म्हणजे टेक्नॉलॉजी हा एक पार्ट आहे, परंतु ऑफलाईन पण काही गोष्टी आम्ही पालकांपर्यंत घेऊन गेल्या, लाईक जो पोषण के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, दैट पॉइंट वॉज वेरी क्रुशियल. सो रॉकेट लर्निंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ECCE टास्क फोर्स WCD. सो उसमें हमने एक मतलब एक सजेशन, एक पॉइंट रखा था हमारे एंड से कि द थीम ऑफ द पोषण माह शुड बी लाइक पोषण भी पढ़ाई भी. सो लास्ट ईयर जो पोषण माह हुआ, सो दैट वाज अ पोषण भी पढ़ाई भी. बट ऑन ग्राउंड भी हमने कुछ चीज़ें की, लाइक मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हम काम करते हैं, तो एक अर्बन प्रोजेक्ट है, तो उनके CDPO से बात करके सो एक रैली निकाली थी. सो यूजुअली दे रैली में जो घोषणा देते हैं, तो इट वाज अबाउट द पोषण ओनली. सो उसमें हमने कुछ पढ़ाई की भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई थी. सो हाँ, लाइक दिस ये सारी चीज़ें पेरेंट तक भी पहुंचनी चाहिए कि क्या हो रहा है आंगनवाड़ी में. सो कुछ वीडियोस आंगनवाड़ी में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनका किस किस डोमेन में, सो पेरेंट को थोड़ा डोमेन के बारे में बताया, सो दैट दे जस्ट कैन क्रिएट एन इन्वायरमेंट एट होम कि उससे बच्चा पढ़ रहा हो. सो मतलब मैं भी जब जाता हूँ ऑन द ग्राउंड, सो आंगनवाड़ी टीचर मतलब पेरेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि चलो बच्चा कुछ एक लकड़ी ले रहा है और मिट्टी में कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो उसको बस बताओ कि ये सीधी रेखा है, ये तिरछी रेखा है, दैट्स द लर्निंग फॉर इट. सो यू जस्ट क्रिएट एन एनवायरनमेंट. तो ये सारी चीज़ें लाइक इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज, इन द फॉर्म ऑफ पोस्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, सो जो भी वर्कआउट हो अलग अलग तरीके से हम पहुँचाते हैं पेरेंट्स तक. थैंक यू सो मच. एंड दैट इज़ सो क्रिटिकल, राइट? क्योंकि बहुत पेरेंट्स को अभी भी ये नहीं पता कि बच्चों के पढ़ाई में और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में जो न्यूट्रिशन से आती है और उसकी कमी से आती है, उसमें कनेक्शन है. Like people look at food in isolation and padhai in isolation, and I think initiatives such as these are very important and key, and discussions such as these, so that focus parent awareness or community awareness mein aaye. I will like to share another experience very recently. I was again part of one of the Anganwadi visits, and it so happened कि कोई ICDS के officials वहाँ पे आए हुए थे, and उनसे एक very informal conversation में in a very defeated tone one of the officials mentioned that अरे मैडम आप लोग आके ये जो भी पढ़ाई एंड ECCE का जो एजुकेशन वाला कंपोनेंट है इसके बारे में इतना बात करते हो, लेकिन इसके ऊपर मैं इतना फोकस हम नहीं कर पाते हैं. देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट वन ऑफ द की रीजंस इज देयर इज नो विजिबिलिटी. लाइक मैं यहाँ से रिटायर होकर चला जाऊँगा एंड उसके बाद आपके लर्निंग आउटकम्स दिखेंगे बाय द टाइम, बट इफ आई डिस्ट्रीब्यूट 20 bags of rice today, I'll be on the newspaper with portion. So that is the difference in attitude, because it all comes from what is visible, what is immediate, like तुरंत हमको outcome दिखना चाहिए.
एंड वर्षा मैम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको पूछूं, क्योंकि आप इस फील्ड में काम कर रही हैं, एंड आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स वेयर आप भी ये चैलेंजेस फेस करती हैं कि एक टाइम पे मैं कितनी जगह रहूं और कितना कुछ एक साथ करूं. सो अभी आकार का करिकुलम आया, या जो कि सक्षम आंगनवाड़ी की जो डॉक्यूमेंट आ गई, तो ये इतने प्रकार के जब गाइडलाइंस आ जाती हैं, तो उनको उनके बीच में कनेक्शन करके एक साथ उसको आगे लेके जाने में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? कहाँ पे कमी रह जाती है, कहाँ आपको सपोर्ट लगे तो बेटर लगेगा, उसके ऊपर थोड़ा अगर डिटेल्स में आप दे के बता पाएँ. आकार का करिकुलम अभी 2016 में चालू हुआ. टप्पा 1 आणि टप्पा 2 हे दोन्ही प्रशिक्षण अंगणवाडी केंद्रांमध्ये आपण अंमलबजावणी केलेली आहे. सो चांगला अनुभव आहे की जेव्हा आकार करिक्युलम आलं, म्हणजे अंगणवाडीमध्ये पहिल्यांदा फक्त गाणी गोष्टी या गोष्टीच होत होत्या. तर आकार करिक्युलम म्हणजे काहीतरी सिलॅबस आला आणि त्यानुसार अंगणवाडी रन केली जाते. सो हा खूप मोठा बदल होता आणि खूप पॉझिटिव्ह बदल होता की ज्यामुळे अंगणवाड्यांना एक स्ट्रक्चर फॉर्मॅट आलं की ज्याच्यानुसार अंगणवाड्या चालल्या गेल्या. दुसरी गोष्ट अशी मला आवर्जून सांगावीशी वाटते की आकारमुळे पालक अंगणवाडीशी कनेक्ट झाले की बालविकासाचे टप्पे काय आहेत, मूल कसं प्रकारे शिकतं, हे पालकांपर्यंत पालक सभा असतील, पालक मेळावे असतील, यामधून आम्ही पोचवू लागलो. आणि एक आपण म्हणूयात की आत्मविश्वास जो आहे अंगणवाडी सेविकांमध्ये, की अंगणवाडी कशाप्रकारे आम्ही चालवू शकतो किंवा कशाप्रकारे बालकाची वाढ होते, विकास होतो आणि मूल कसं शिकतं, हे सांगण्यासाठी त्या सक्षम होऊ लागल्या. तो एक आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये येऊ लागला. चॅलेंजेस आहेत, पण पॉझिटिव्ह गोष्टी पण आहेत. बट जो आप न्यूट्रिशन में भी काम करती हैं एंड आकार करिकुलम भी देखती हैं कि वो हो, और बाकी और भी सर्विसेज, तो एज अ सुपरवाइज़र जिस रोल में है, उसमें आपको क्या चॅलेंज नजर आता है? मी मगाशी जसं उल्लेख केला तसंच की मॅनपॉवर कमी आहे, त्याच्यामुळे लोड आहे. आकार करिक्युलम सेट करताना आता ऑलरेडी महाराष्ट्रामध्ये किंवा पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये तर पूर्णपणे आकार सेट झालेला आहे. ऑलरेडी सगळ्या अंगणवाड्या आकारानुसार रन केल्या जातात. त्यामुळे आकारवरती टप्पा 3 अजून प्रस्तावित आहे आपला, तो येत आहे. सो आकारसाठी अंगणवाडी सेट झालेली आहे. फक्त जेव्हा ॲट अ टाईम सगळ्या गोष्टी येतात तेव्हा ॲज अ मल्टीटास्कर म्हणून काम करावं लागतं, तेव्हा काही गोष्टी थोड्या सुटतात आणि त्याचं मायक्रो नियोजन करायला लागतं. दुसरी गोष्ट, जेव्हा एखादी गोष्ट सक्सेसफुली रन होण्यासाठी मायक्रो मूल्यमापन होणं पण गरजेचं आहे. ते कुठेतरी सुटलं जातं ॲज अ सुपरवायझर म्हणून, की इव्हॅल्युएशन होत नाही आमच्याकडून. तेवढ्या गोष्टी त्यांना सांगितल्या जात नाही की कुठे वाव आहे सुधारणा करण्यासाठी, कुठले गॅप्स राहतात ते. सो हे एक आहे. Thank you, Varsha ma'am. Bhagita, I'll just take a leaf from Varsha ma'am's point. Given that you're also probably working with a lot of organizations in different capacity, how do you facilitate convergence and collaborations with various stakeholders and organizations, such as those focused on early childhood education or community development, to promote good nutrition and health practices? To answer this, I'll give a recent example. हमने एक नई पार्टनरशिप की थी इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. when we entered the district, we saw that there are already few organizations working in education space. ये स्पेशल डिमांड आ गया कलेक्टर सर से कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हमें इंट्रोड्यूस कराओ जो हेल्थ के ऊपर भी काम करते हैं. एंड दैट इज़ वेयर वी थॉट दैट education and health can be a good convergence. In this, what happens is पूरे दिन में आंगनवाड़ी को कई सारे काम करने पड़ते हैं, and she doesn't have a fixed routine to do this. And the simple thing that we wanted to come together and do is make a timetable for her. Make a timetable for her to say that, okay, if she starts at 10, what time the preschooling should end, and after that how can she effectively do her health related work. So putting that in place really helped, and we did that with the help of the head of the department and the collector. So that is the level of conversions we were seeing at the system level. We also believe in giving a lot of support at the field level, because we know that the Anganwadi is given a lot of additional tasks. And if she's not getting a support, I'm not saying support means that there is another
person doing her work. But if she's currently doing her work and if there is some feedback given to her, if we are able to tell her that how to do that 1 hour task in a very in maybe half an hour, but she does it in a systematic way, ताकि उनके targets achieve हो, ताकि उनको काम आसान लगे. Right now she is hustling with a lot of things to do and how to do it. So how to do it is also one big question to resolve for the Anganwadi teacher. And for them to give that time, to give them a dedicated timetable, to give them easy integrated solutions. So we are doing some pilots where we have our own solution, but how do we integrate that in the system so that there is no two apps that the Anganwadi teacher has to use. There are no two register that she has to maintain. Can all of it be maintained in the portion tracker itself? So how do we look for integrated approach at the system level? And also at the field level, provide her support in terms of, okay, you're doing well. One simple thing that we started doing is we started highlighting 3 best performers of the week. That motivated her to do more home visits. That motivated her to like stop her ECE work at 12 and go for her home visits, because while doing one or the other task, she is missing the second one. So motivating her throughout the month, throughout the week, helping her with giving her good feedback, what are her area of improvements. She's doing 50% of her work correctly. I would say 80% work. 20% को सुधारने की ज़रूरत है, तो वो 20% सुधार कैसे लाया जा सकता है? Can the supervisor give them qualitative feedback based on solutions like, अभी supervisors जाते हैं visits के लिए, but can they have a tool in hand, like an observation tool which says that okay 10 point में 8 point आपने अच्छे किए, ये 2 point में आप सुधार लाइए. So that is 8 things she's already doing well. So how can we easily communicate to her that it's just the 2 things that you have to do in a better way, and the next week or the next day she starts doing it in a in a much qualitative way, I would say. So that's the level of convergence that FMCH is seeing at both field level and at the system level as well. Thank you, Bhagita. I think you brought up a very important point, and which is so basic, and all of us thrive on validation, all of us thrive on some sort of an acknowledgement. लेकिन at a field level हम भूल जाते हैं कि जो हमारे सबसे नीचे जो हमारे ground staff हैं, who are carrying out all the programs that we design, उनको किस तरीके से acknowledge करें and motivate करें. And I think motivation is a great way of getting people to do something. And I think that brings me to you, Kishore ji. In one of our conversations ये बात आई थी कि किस प्रकार से even you are looking at working with when you work with Anganwadi workers or when you work with parents, motivation is a huge factor that plays a role. तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहेंगे तो. Sure, 100%. तो मोटिवेशन इज़ समथिंग द मिसिंग लिंक ऑफ मतलब जो भी हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं एंड जो भी एक्चुअल में हो रहा है, तो लाइक कुछ चीज़ें जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत अच्छा कुछ कर रही है, बट जस्ट बिकॉज शी इज़ नॉट गेटिंग एनी रिकग्निशन, मतलब अभी 1,10,000 आंगनवाड़ी में से कोई आंगनवाड़ी वर्कर विच इज़ लिटिल रिमोट टू द सिटी टाइप ऑफ एरिया, तो वहाँ पे अगर कुछ बहुत ही अच्छा कर रही है तो बट नोबडी नोज कि उसको कैसे किया जा सकता है. सो वी ब्रॉट टेक्नोलॉजी हियर. सो आवर टेक्नोलॉजी अलाउज अस टू कनेक्ट विथ एनी नंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स. सो राइट, सो जो भी हम CTS कॉल टू एक्शन हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को देते हैं, सो वी आर एबल टू track, we are able to monitor ki who is responding in the group, right? So based on that data, so we can give some smaller recognition like thank you for doing this, a small poster or a text message or a voice note. It works awesome, right? मतलब इतना बढ़िया उसको हमने implement होते देखा है कि एक simple सा digital image saying ki thanks for participating in this campaign. So we run several campaigns for them, as well as so recently we have started working with the state ICDS. So we are just sending a daily timetable on the WhatsApp groups to the each and every teacher. So 3,400 WhatsApp groups we have. So 3,800 sorry. So 3,800 is the number of supervisors that we have in our state. So उन WhatsApp group पे daily timetable जाता है. We have almost 89,000 आंगनवाड़ी workers in those group. So now we can able to track कि वो कितने लोगों तक पहुँचा, how many of responded on that
मैसेज स्पेसिफिकली. सो कुछ और भी चीज़ें हमने करी है. तो बेस्ड ऑन दैट डेटा वी वांट टू सेंड सम रिकग्निशन टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स सेइंग कि हाँ थैंक्स फॉर डूइंग दिस in this week. So once in a week, once in a fortnight or once in a month also, so ये रिकग्निशन अगर हम उनको भेजा करेंगे सो एटलीस्ट एक मैसेज तो चला जाएगा कि हाँ हम जो भी कर रहे हैं तो समवन इज लुकिंग एट दिस, राइट. मतलब ऐसा नहीं कि हाँ वो बता रहे हैं और हम कर रहे हैं, मतलब पता नहीं कितना हो रहा है, कोई देख भी रहा है नहीं रहा है. सो जो गैप है वो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू बाहर निकल सकता है. एंड ऑल्सो थोड़ा ब्रॉडर लेवल रिकग्निशन भी हो सकता है, लाइक मतलब वंस इन अ 6 month और वंस इन अ क्वार्टर समथिंग. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ऐसे कुछ टीचर्स को या सुपरवाइजर्स को भी डेफिनेटली एवरीवन नीड्स मोटिवेशन, राइट. सो कुछ सुपरवाइजर्स को भी या जो भी इस सिस्टम में काम कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, तो इनको कुछ अगर हम रिकग्नाइज कर पाए या इनको कुछ हम मोटिवेट कर पाए थ्रू दिस, तो यस टेक्नोलॉजी कैन allow us to do this. So yes, we are trying to implement those things. So we have started from few districts, so but hopefully we'll do it in a more effective way, so that everyone should feel ki हाँ मतलब everyone wants ki हाँ I should get recognized. Yes, what I'm doing. Thank you. I think that's a beautiful example for how technology-based solutions can effectively facilitate the implementation of ECCE on ground. I'm going to shift the lens a little bit towards the education component of the ECCE part. And I'll share a story, and few of my colleagues are aware of this. One of the classroom visits revealed that बच्चे बहुत अलग अलग जगह से की महाराष्ट्र again is a state that is home to people from different states. So once we noticed that there was this child in a classroom जो जिसको what Zakia ma'am was saying introduction to alphabet हुआ जा रहा था, और वहाँ पे they were teaching A for apple, B for ball, and the child just couldn't understand what apple is. And I could see the frustration on the teacher's face, and she was just struggling कि कल ही तो पढ़ाया था, ये photo देख के बताओ. And the child was just like, I think it was from a different state and not from Maharashtra. And then the teacher said that, "Acha, Safarchand." And the child was like, "I don't know who Safarchand is." And from there, then when the teacher was asked, when the teacher said, "Acha, theek hai," again एक बड़ा सा उसका चित्र दिखा के कि what do you think this is? And then the child said, "Arey, this is simple. You are wrong. This is not Safarchand. This is Seb." And that's when you realize that there are so many layers to this, right? Like, how do you keep all of that in mind while looking at implementing a curriculum? कि इतने contexts हैं, कितने चीज़ों में हमको similarity differences नज़र आती हैं. And I think this is, I'm going to open this question to all three of you कि from in your experience in classroom और in आंगनवाड़ी जब आप visits करती हैं और देखते हैं, how do you see these kind of breakdowns, and or have you seen any interesting innovations that आंगनवाड़ी workers or teachers have done उनके अपने आंगनवाड़ियों में या स्कूलों में, जहाँ पे इस प्रकार के challenges को वो address कर पाते हैं, challenges related to diversity and context or the lack of it? याच्याबद्दल हे सांगेन मी की मातृभाषेमधून शिक्षण हे किती महत्त्वाचं आहे. हा खरंच खूप मोठा मुद्दा आहे. कारण की आपण बघितलं की 0 to 6 इयरपर्यंत जर 90 ते 85 ते 90% विकास ब्रेन वायरिंग होत असेल, तर त्या संकल्पना मुलाला स्वतःच्या मातृभाषेमध्ये कळणं किती महत्त्वाचं आहे. म्हणजे जर आपण 0 to 3 वरती 0 to 6 वरती जास्त काम केलं, तर पुढे जाणारे ज्या गोष्टी आहेत, पुढे जाणारा जो आपला करावे लागणारे प्रयत्न आहेत ते कदाचित कमी होतील. याचं एक एक्झाम्पल मी देईन की माझीच अंगणवाडी एक आहे की जी तेलुगू लँग्वेजमधली आहे, अर्बन प्रोजेक्टमधली. सो तिथे सेविकाताई या मराठी आहेत, त्यामुळे त्या ती लँग्वेज शिकवू शकत नाहीत. पण मदतनीस ज्या आहेत त्या भाषेच्या आहेत. सो ते 2 द्विभाषिक अंगणवाडी ती चालते. ज्या इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातात त्या मदतनीसताई त्यांच्या लँग्वेजमध्ये सांगतात. म्हणजे मूल जेव्हा संकल्पना शिकत असतं तेव्हा खरंच मातृभाषेमधून शिकणं खूप महत्त्वाचं आहे. हा अनुभव आहे. Similar to this, so my native place is Solapur. So Solapur में भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग एंड कन्नड़ा स्पीकिंग पेरेंट्स भी रहते हैं. तो
मतलब what I have seen on the ground is कि आंगनवाड़ी एक बार शुरू हो जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैज़ हर ओन सिस्टम इन द आंगनवाड़ी की, मतलब उसको जो भी ट्रेनिंग दिया है एंड बाकी सारी चीज़ें वो एक तरफ है, एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स है, मतलब उनका खुद का एक रिजर्व स्पेस है एंड दे हैव फुल ऑटोनॉमी ऑन दैट. सो ये सारी चीज़ें होती है. लाइक मतलब मैं एक इंसिडेंस भी बताना चाहूँगा. So she was just trying to tell a child ki yell for lion. So he always saying yell for ऐसे. So yell is always kho for him. So that's okay. But हाँ, I have seen such examples on the ground. Thank you. You want to share something? I don't have a very education related example, but so we have a solution designed for the Anganwadi worker where she has to educate mothers around right nutrition choices in the first 1,000 days. We have a team of direct intervention also who uses the same solution, but they're the frontline, our own frontline workers are doing the same. What I observed is the Anganwadi worker, like sir said, she has her own system going on in the Anganwadi, right? So जब भी हमने training किया, we saw that more than our frontline workers, the Anganwadi workers were more innovative in using the solution that we had designed for them, and our team was struggling with use of tech and using the video and everything together, but she with her own skills has already set up a process on how to use it at the field level. So when it's just that good training that I think sometimes really helps her to take the right decisions in terms of how to deliver the program. Maybe she doesn't want the solution of how to deliver, but the recent updated knowledge might help her build new solution, and that also helps the NGOs to come up with some new ideas. We've seen Anganwadi workers transforming their own Anganwadis with good materials in-house. Even if it doesn't come from the department at the right time, they will quickly develop something on their own and immediately stick it all over the wall and start doing their program. So I think that is really motivating and interesting to see how creative they are. And this is different in all the districts, I feel. मतलब हमने नासिक में देखा है, we have seen it in MP. They have their own skills in doing this. So this is the experience that I have had with the Anganwadi workers being very creative and innovative with their own skills that they have. No, I agree with you. You want to add something? Yes. Want to add one thing. जैसे कि अभी हमने देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हैज़ हर ओन एनवायरनमेंट, हर ओन सिस्टम ऑफ वर्किंग, राइट. सो दैट्स वाई अलॉन्ग विद द वेरी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स, राइट, जो भी हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को देते हैं, तो उसके साथ ही साथ कुछ एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग की चीज़ें कुछ इम्प्लीमेंट अगर हम कर सकते हैं तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं. सो एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग इज समथिंग जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स एक दूसरे से सीखे कि वो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करती है. मतलब हमने बता दिया कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग समथिंग, राइट, बट एक्चुअल में उसको जब इम्प्लीमेंट करते हैं, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ उनको पता है कि ये रोज़ देना है बच्चों को एंड उसको वेलकम करना है फॉर एग्जांपल, वो बच्चा सीधा तो रोल लेगा नहीं रोज़. सो दैट इज़ व्हाट द एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग इज़ कि आप इसको कैसे करते हो आपके आंगनवाड़ी में, सो दैट वी कैन जस्ट शेयर फ्यू गुड एग्जांपल्स फ्रॉम द उनके ही कम्युनिटी से, उनके ही स्पेस से, जिससे उनको पता चले कि हाँ इसको मैं कर सकती हूँ या ये मैं नहीं कर सकती हूँ. ये सारी चीज़ें वो एक दूसरे से सीखे. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू जस्ट ब्रिंग मतलब इन द पिक्चर कि हाँ इस तरह से भी ट्रेनिंग की जा सकती है. मतलब आइडियल एक वे है करने का और उसको एक्चुअल करने का कैसे हो सकता है. मतलब कुछ 1,10,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स है, सो वी हैव गुड नंबर ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो उसमें से कुछ तो हमें अच्छे से मिल सकते हैं जिनको कुछ अदर आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो उनको फॉलो करके या देख के सीख सकती है उनको. या दैट्स व्हाट आई वांट टू ऐड. Thank you. I think आप सबसे सुनने के बाद what I'm realizing is that in order to facilitate an effective delivery of ECE program, जो बहुत ज़रूरी है कि हम we place our trust in our आंगनवाड़ी workers, we design effective curriculums and ensure कि वो उन तक पहुँचे and हर level तक उसकी एक इम्पॉर्टेंस पहुंचाई जाए. क्योंकि अगर सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर तक लेके जाएंगे और किसी और को ऊपर नहीं पता होगा, इवन देयर द डिलीवरी बिकम्स डिफिकल्ट. And we have also seen, like at CLR, we've been conducting a lot of
what you call it, exhibitions in Lucknow. तो हमने जब शुरुआत की थी वो बात ये हुई थी कि we will work with supervisors, and जो हमारा अपने बाहर resources देखी हैं उस प्रकार से we had set up our resources at each block in Lucknow, the CDPOs that we are working with, and the supervisors were involved. Two of the very motivated supervisors came and gave us a suggestion, and we were inviting the Anganwadi workers as guests, by the way, to come and see and learn. And two of the very motivated Anganwadi workers supervisors came to us and requested that if we could invite, instead of inviting Anganwadi workers as guests, अगर हम उनको as host बुलाएं और उनसे वहाँ पे resources बनवाएं और उन्होंने जो क्लास अपने आंगनवाड़ियों में resources बनवाई हैं वो हम हमारे resources के साथ रखें. So initially we were a little skeptical because we had limited budget, limited space, limited time, and we were not sure how to go about it, the same problems that everyone faces. But we were open to the idea. We wanted to do it for one block, and हमने वो शुरू किया. And like all of you said, we were blown away with the kind of innovation we saw. वहाँ पे जाने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि CLR resources दिखा रही हैं अपनी कि आंगनवाड़ी workers का event है, because there were so many resources that they had created. And they had literally, I could see the wall marks behind the posters. They had peeled off and they had shown, gotten it to the venue to show us कि किस प्रकार की innovations वो कर रही हैं. So I think it is about giving that access, giving that space, giving that opportunity, and of course an environment to learn. और ये सारी सही मात्राओं में दिया जाए तो we will see a positive impact. Zooming out a little bit from the education and the nutrition part, Bhageda, I want to ask you a question. In the beginning, you talked about that you've seen various forms of convergence in the way that you're working with the government, with different organizations at the ground level. Are there any strategies that you would recommend for fostering these kind of convergences that you've experienced? Because people usually struggle. क्या होता है कि लोग साथ में तो आ जाते हैं कि हम करेंगे, but eventually, obviously, you want to prioritize your own program and you get into a silo of doing your own thing. Then are there any strategies that you've experienced in your working that with different organizations and especially focusing on first 1,000 days कि कैसे organization जो education में भी काम कर रही हैं, जो health में भी है, probably जो tech में भी है, if they can all come together and aid in taking forward a solid intervention towards our Anganwadis? One is system के आगे तो हम नहीं चल सकते. We have to work with the system. So working in silos is definitely something which is not with the right vision, I feel. As per my experience, I feel that if we know what the field level workers need, what the Anganwadi workers need, we'll be able to take it to the department and say that this is their need and that is why we want to do it. But also understanding somebody who is working in the education space has to understand the health and nutrition component very well. And for us, we should understand the education component very well to come together, and that is how it is going to work. When we started working in Madhya Pradesh, we started working with Key Education Foundation, and we saw that both education and nutrition was important to them and us as well for working with the Anganwadi workers. If we say that to the Anganwadi worker that you focus only on nutrition, she's not going to do it because she has a more of education related work that she has to do. And if they say that, you know, work only on education, she'll say that we have more health and nutrition related work as well. So that's not going to work for us on field level, and that is why we have to see both of the components together. And also, if the department believes in such conversions, I think that is also very, very important for both the organizations to come together. I think in some states and some districts, we have got a lot of support from the department to come together and work on this issue. So I think that was something which helped us to work together and build solutions together. We don't want to give a health-related app separately and an education-related app separately. So how do we bring both of the components together? And we have to come to some alliance with this is what is needed to the for the department, and we bring a joint solution to that. Thank you. And I completely agree with you. And it's so true when you said that
someone from health needs to know what education looks like in the early years and vice versa. Because I remember attending a conference where a lot of the folks from education were so confused when the panelists were talking about the first 1,000 days. They had no idea what those first 1,000 days were. I mean, of course, by the word, by hearing first 1,000 days, you understand what it would mean, which is early years. But what is the importance of it, and why folks from nutrition and health talk so much about it? I think that awareness was completely lacking, which is very, very scary, because that's something that we should know. I'll tell you one example how I understand education. So in first 1,000 days, till 6 months, the child is only breastfeeding, and after that, the first thing that the mother is teaching the child is recognizing the fruits and vegetables that she is giving to the child. So we always tell the mother that talk to the child about what you are giving, like tell him that, oh, this is chapati, this is what I'm making for you. And that's where the education around nutrition happens in the first 1,000 days. So if that is happening so early, and she's also teaching how to recognize the color of red color of the apple, yellow color of the banana. It's very, very important that, we focus from the first 1,000 days, not from nutrition point of view only, and not from teaching only about the maths and the science, but teaching this basic colors begins from that day itself, from the food, I feel. So this is how I understand educating the child around health and nutrition, and then proceeding, making him, school ready, making the child school ready. So, yeah. That's a beautiful point. Thank you. And I will just ask a last question to any of you who would like to take. How do you think at a policy level, policy interventions in the area of nutrition and health can be effectively integrated again into early childhood education initiatives in order to support the development of young children better? Anybody can answer that. Actually, when we are saying ki development of a child, right? Matlab, we can separate these three things from each other: health, nutrition, and एजुकेशन लर्निंग वी कैन से. तो मतलब जो भी पॉलिसीज़ अभी है तो इनको इंटीग्रेट करना इज़ वन थिंग. सो मतलब वी आर आल्सो ट्राइंग कि उसमें कैसे किस तरह की कुछ चीज़ें नए से इंट्रोड्यूस की जा सकती है. लाइक मतलब पोषण को पढ़ाई के साथ कनेक्ट कर दिया तो उसको न्यूट्रिशन के साथ भी कैसे किया जा सकता है. सो एक्चुअली आई डोंट थिंक कि आई डोंट नो कि व्हाट इज़ अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस नाउ, बट येस इस तरह की कुछ डिस्कशंस में या कोई अलग अलग एक्सपर्टीज इन डिफरेंट हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन में है तो इनके अच्छे से कोलैबोरेशन से डेफिनेटली वी कैन ब्रिंग आउट समथिंग विच कैन बी इंटीग्रेटेड पॉलिसी फॉर द हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड education. I just want to add one thing to something that I said earlier as well. I don't think there is a need to change policy at a very big level. The policy is great, but how it is going down at the Anganwadi level or at the ground level is something that needs more support. So instead of changing the policy, how can we do system strengthening by giving them the right support? Can that bring the change in just ensuring that the policy is driven in the right way? I think that can be the solution for us to come together and work together. सेम की ज्या पॉलिसी बदलण्यापेक्षा आपण ज्या गॅप्स आहेत म्हणजे ॲक्च्युअलमध्ये फील्डवरती आम्ही जेव्हा काम करतो तेव्हा ज्या गॅप्स आहेत त्या भरून काढण्यासाठी आपण काम केलं तर बेटर राहील. Thank you, all of you. Thank you so much for sharing such thought-provoking points and very, very interesting experiences. I think my takeaway from this conversation is that it is very, very important. Like, we talk about convergence, we talk about coming together and working, and I think in our own ways, वो कहीं हम छूट जाते हैं. So learning about the other aspects of early childhood development, like if you're from health, learning about education and the other way around, and even the kind of role that technology plays, figuring out better support mechanisms for our system leaders, for our Anganwadi workers, for our supervisors, for our CDPOs, figuring out how can we deliver our programs better, how do we simplify it in a way that it doesn't overwhelm
people, because I agree that there are great policies and curriculums and guidelines in place, but the delivery is where we start failing. And on that note, I would say that let's try to strive towards the slogan that I think you all came up with, which is Poshan Bhi and Padhai Bhi. Thank you. Thank you so much.